Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to discuss about MCQ questions on DC machines. This is part 2. Already I have developed part 1 and will develop part 3 also. So this is the first question we have, voltage equation of DC motor. Voltage equation of DC motor. Suppose we have a shunt motor like that, right? This is the brushes we can show. This is the field winding and this is the VT. This is the resistance Ra, resistance of armature winding, and this is generated EMF EB. And we know current is, in case of motor, it takes the current. It converts electrical energy into mechanical energy. So it will take the current IL. Out of this IL, armature will take IA and field will take IF. So we can say this is higher potential, this is lower potential. So higher equal to क्या होगा? Lower plus something. This is lower because current always flows from higher to lower. So Vt is higher. Okay. So what is the value of Vt equal to what? EB, that is lower plus something. Vt equal to EB plus IARA. Okay. So this is the equation number. This answer is correct. EB plus IARA in case of motor, right? Question, EB upon V ratio of DC motor is an indication of its EB into IA क्या होगा? पावर आउटपुट ऑफ आर्मेचर. VT into IA क्या होगा? पावर, that is the input power to the armature, right ना? So you can say it shows what? EB upon IA अगर कैंसिल कर दो, सपोज करो कि EB into IA upon VT into IA. This is what? Output of armature. This is input of armature. This is cancelled. So EB upon VT क्या शो करता है? It shows the efficiency only. It shows the efficiency. Question number 3. Counter EMF of a DC motor exceeds supply voltage? No. In case of motor, EB is less than, counter EMF मतलब EB is less than VT. Okay. So exceeds supply voltage? No. Adds supply voltage? No. Helps in energy conversion? Regulates its armature voltage? Yes. It regulates. The counter EMF of a DC motor regulates its armature voltage. So D is correct answer. Okay. Question number 4. A series motor is the best suited for driving lathe, cranes, hoist, shears, punches, machine tools. Yes, it is best suited for lathe, cranes and hoist. Okay. Question number 4. B answer is correct. Question number 5. Fill in the blanks. When load is removed, the motor will run at highest speed. Shunt motor, cumulative compound motor, differential compound motor, series motor. As load is removed, speed will be dangerously high in case of series motor. Okay. So question number 5 का क्या है? D answer is correct. Series motor. Question number 6. Unlike a shunt motor, it is difficult for a series motor to stall under heavy loading. Because in case of series motor, right, T is proportional to phi into Ia, and phi equal to क्या होता है? Ia, so it is Ia square. So heavy load पे क्या होगा? Torque बढ़ेगा या कम होगा? Torque will increase. So unlike a DC shunt motor, it is difficult. In case of shunt motor, as you increase the load, it will stop. It is self-protecting, we can say. But it is difficult for a series motor to stall under heavy loading because, clear, it develops high overload torque. Its flux remains constant. Yes, that is the answer.
It shows down considerably, back EMF is reduced almost zero. No. So at a heavy load, flux will become constant. Initially, flux is proportional to Ia, so it is a phi T is proportional to I square. But after some time, as you increase the load, phi will become constant. We have studied in theory, flux will become constant. So when the flux will become constant at heavy load, torque is proportional to Ia. Okay, it flux remains constant. Question number B is correct. Question number 7. Speed of DC motor can be controlled by varying. Speed of DC motor can be controlled by varying its flux per pole. Okay. Resistance of armature circuit. Okay. Applied voltage. Yes, all are correct. Na? So this D answer is correct. All of above. You can control the speed by, we know EB equal to what? VT minus IA RA. EB equal to क्या होता है? KN5 equal to VT minus IA RA. याद रखना ये, this is called as voltage equation, is very very important in case of speed control, in case of characteristic, in case of starter. This equation is very very important. Clear? So equal to, so N equal to क्या होगा? VT minus IA RA upon K5. So speed of DC motor can be controlled by varying the flux, correct? Resistance of armature circuit, correct? You can add some resistance here. Applied voltage, correct? So answer is D is correct, all of above. Okay, so I'm rubbing it. Question number 8. A cumulative compound. This is a cumulatively compound. You can say this is the armature winding, this is the series field winding, and it is a long shunt. So shunt field winding will be connected after the series field winding here. This is a long shunt cumulatively connected compound motor driving a load at rated torque and rated speed. If the series field is shunted here. Okay, shunt कर दिया मतलब resistance लगा दिया. By resistance equal to the resistance of the series field, keeping the torque constant. T is constant. T2 equal to what? T1 is constant. T2 equal to क्या होता है? Phi 2 IA2 equal to Phi 1 IA1. टॉर्क इज कांस्टेंट. अगर आपने इसको शंट कर दिया तो सीरीज फील्ड फ्लक्स जो है, जो यहां से IA जा रहा था, इट वॉज टेकिंग करंट, सॉरी IA इट वॉज टेकिंग, सो उसमें से कुछ डाइवर्ट होकर ऐसे आएगा, तो सीरीज फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. भाई फाई 2 क्या है? फाई सीरीज प्लस फाई शंट 2 में IA2 equal to phi series plus phi shunt in case 1 into IA1. यही है ना? Now if it is shunted, what will happen? भाई करंट थ्रू सीरीज फील्ड वाइंडिंग कुछ डाइवर्ट यहाँ से हो जाएगा, तो करंट थ्रू सीरीज फील्ड वाइंडिंग कम हो जाएगा. दिस विल बी रिड्यूस. इसका मतलब है phi 2 विल रिड्यूस. और टार्क कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली IA2 विल इंक्रीज. भाई जितने रेशियो से कम होगा उसी रेशियो से बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा? टॉर्क कम हो जाएगा ना. T2 T is constant. Okay, तो IA will increase. Okay, so the armature current increase. Okay, that is the correct answer. Question number 8 का A is correct है. Motor speed increase, armature current decrease वगैरह, forget it. This is the answer is correct. Okay. Okay, question number 9. Question number 9. A separately excited DC motor.
I am going to draw the separately excited मतलब this is the field winding. Clear? Separately excited F1, F2. We will design this field winding for any convenient voltage, and this is the armature winding. Here it is a VT. We are applying the supply, so it will take IL equal to IA. It will take, and here we are applying the voltage plus minus some voltage. We are applying whatever there. Okay. Armature resistance 0.5. It runs from 250 volt. DC supply drawing. This is 250 volt. Okay, drawing an armature current of 20 ampere. So you will get EB. EB1 or EB equal to क्या आएगा? VT minus IA RA. राइट? VT कितना है? 250 माइनस IA कितना है? 20 माइनस IA 20 into RA कितना है? 0.5. So you will get 240 volt. You will get 240 volt. Now, and speed कितनी है? 1500 RPM. For the same field current, okay, same field current, no change. The torque developed for an armature current of 10 ampere. Torque developed for 10 ampere. So EB2 equal to what? EB2 equal to what? VT 250 minus IA2 कितना है? 10 into 0.5. What is the EB2? You will get 245. Okay, so we know EB1 upon EB2 equal to N1 phi1 upon N2 phi2. And for the same field current यहाँ एक word था, same field current. इसका मतलब field current same मतलब flux will be same. So we have to calculate N2. So N2 equal to क्या होगा? N2 equal to N1 into EB2 upon EB1. So it is N1 is what? 1500 is given. This is 1500 is given. EB2 is 245. Okay, upon what? 240. So you will get 1531. You will get slightly more than that. Okay, so I will get N2 is 240, 50, 1531. Okay, the torque developed for an armature current equal to, अभी torque developed क्या होता है? इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली. Torque developed equal to what? 2 pi NT upon 60 equal to EB into IA. EB into IA. So T equal to what? EB. कितना EB? 245. IA कितना है? 10. ये 60 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 2 पाई. N कितना है? N is 1531. 1531. So by using this, you can calculate the torque developed. Okay. So I am going to use the calculator. I am just using the calculator. I am getting it 15.28 Newton meter. So this is the conceptual thing I told you. आप चाहो तो उसको और सिंपल वे में कर सकते थे. टॉर्क डेवलप्ड इक्वल टू यू कैन फाइंड. कैसे निकाल सकते हैं टॉर्क डेवलप्ड? पहले टॉर्क पहली केस में निकाल लो एंड सेकंड केस में. ओके, सो यू कैन डू इट. चलो, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इट. ओके, so sometimes in GATE examination they can ask these questions. I think it is from the GATE examination only. I am rubbing it. Okay, question number 10. Question number 10.
An electric motor with constant output power will have a torque speed characteristic in the form of a constant output power. Output equal to what? Output equal to 2 pi nt upon 60. अगर ये कांस्टेंट है सो पावर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है n इंटू टी. सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा ना भाई. दिस इज कांस्टेंट, सो ये आप चाहो तो इट इज कांस्टेंट p बाई t हो जाएगा. सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क. अगर n बढ़ाएगा तो टॉर्क कम होगा, टॉर्क बढ़ाओगे तो n कम होगा. ओके, so characteristic, an electric motor with a constant output power will have a torque speed characteristic. Straight line, no. Straight line parallel, no. Circle about the origin, no. Rectangle, yes. That is the D answer is correct. It is inversely proportional means rectangle hyperbolic path. So question number 10 का क्या है? D. Question number 11. A 4-point starter is used to start and control the speed of a DC shunt motor. Okay, with flux control method. Yes, because 4-point starter and 3-point starter you can use for DC shunt motor. What is the drawback of 3-point starter? We have discussed. If you are going to control the speed above the rated speed, how will you achieve the rated above the rated speed? By flux control method, by weakening the field current, by weakening the flux. जब आप फील्ड करंट को कम होंगे तो करंट थ्रू होल्डिंग कॉइल विल आल्सो बी डिक्रीज, एंड व्हेन द करंट थ्रू होल्डिंग कॉइल डिक्रीजेस, द करंट थ्रू एंड you know होल्डिंग कॉइल एंड फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. अगर फील्ड करंट कम करेंगे तो होल्डिंग कॉइल का करंट भी कम होगा. होल्डिंग कॉइल का करंट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द होल्डिंग कॉइल विल बिकम लेस देन द फोर्स ऑफ पुल ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग के कारण वो हैंडल बैक पोजीशन में आ जाएगा, ऑफ पोजीशन में आ जाएगा. ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 4-point स्टार्टर यूज करते हैं. तो डीसी शंट मोटर विथ फील्ड वीकनिंग कंट्रोल अगर आपको करना है तो. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. A 200 volt, 2000 RPM, 10 ampere separately excited DC motor has an armature resistance of 2 ohm. Rated DC voltage applied to both the armature and field winding of the motor. If the armature draws 5 ampere current from the source, torque developed by the motor is. Same problem इसके पहले मैंने शायद I think I have discussed question number 9. Same problem similarly. So EB1 equal to क्या होगा? VT minus IA1 RA. Right. So क्या होगा? VT कितना है? 200 minus IA is 10 into RA is 2. So it is 180 volt. EB2 you can calculate. EB2 equal to what? VT minus IA2 RA. So it is what? 200 minus IA is reducing to 5 into 2. So it is 190 volt. EB2 is reduced. Now एक और consider है EB1 upon EB2 equal to N1 phi1 upon N2 phi2. You know it. EB equal to क्या होता है? P phi Z N upon 60A. यहाँ पर P Z 60A all are constant, so it is K और K cancel हो जाएगा N1. अच्छा, आप अभी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? You are applying in both the cases rated voltage, so flux will be constant रहेगा कि नहीं? You are not controlling the flux. You are keeping the flux constant. क्यों? उसमें क्लियर लिखा है in both the cases rated DC voltage is applied to both the armature and field winding. तो जब फील्ड वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस सेम है फील्ड वाइंडिंग का, तो फील्ड करंट सेम होगा. सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? यू कैन फाइंड द N2. सो N2 इक्वल टू व्हाट?
N2 equal to what? N2 equal to N1 EB2 upon EB1. Okay, so from here you will get, ये क्या आ रहा है, N1 कितना था 2000, that was 2000, EB2 is 190 upon 180. So if you use the calculator, 19 upon 18, okay, into 2000, I am getting 2111. I am getting 2111 RPM. Now we know the same formula, EB into IA, output of armature. Output of armature EB into IA equal to what? 2 pi n TA upon 60. 2 pi n T upon 60. So if you take output of armature, you will get TA. If you take output of motor, you will get T shaft. Be careful about it. Formula same है. Output equal to 2 pi n upon 2 pi n T upon 60. Output of armature लोगे तो EB into IA equal to TA आएगा. अगर output of motor लोगे तो out T shaft आ जाएगा. So everything is there. You can calculate TA. So TA equal to what? TA equal to EB कितना है 190, IA कितना है 560 यहाँ जाएगा अपॉन 2 पाई n कितना है 2111. So you will get TA second case में. If you use the calculator, just 190 into 5 into 60, 300 upon 2 pi into this, I am getting 4.3 Newton meter. So that is the answer I am getting. Okay. Okay. So in this way you can do it. Question number 13. Question number 13. 240 volt DC shunt motor with an armature resistance of 0.5 ohm has an, okay, so shunt motor. I'm just drawing a shunt motor. Actually no need to do it, but as I am going to explain you, so I am going to draw the shunt motor. This is the shunt motor. This is the brushes. Okay, here it is the terminal voltage VT plus minus. We are applying the voltage. It will take IL. It will take IA, it will take IF. Clear? So 240 volt shunt motor. So EB1, you can calculate EB1 equal to what? VT minus IA RA. 0.5 ohm. Full load current has armature resistance this and full load current of 40 ampere. Find the ratio of stalling torque. Okay, so you can get 240 minus IA कितना है 40 into 0.5. You will get 220 volt. That is EB1. What is the EB2? They are asking find the ratio of stalling torque to the full load torque. EB2, that is the stalling torque, stalling condition. क्या होगा? Zero. No need to do it. क्यों? Why it is zero? Stalling means what? Stationary condition. Stalling means स्टेशनरी कंडीशन. स्टेशनरी कंडीशन मतलब एन कितना होगा 0. EB इक्वल टू क्या होता है P5ZN अपॉन 60A. अगर N 0 है तो EB2 कितना हो जाएगा 0 ना. स्टॉलिंग कंडीशन मतलब N 0. N 0 मतलब स्पीड मीन्स 0 मीन्स EB2 0. Okay, so EB2 you got 0. So EB2 equal to what? EB2 equal to what? VT minus IA RA. Okay. So you can say IA stalling. स्टॉलिंग कंडीशन में करंट कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. क्यों? दिस इज 0. सो IA RA इक्वल टू VT. सो VT अपॉन RA. VT कितना है 240 है.
आर ए कितना है? ओ, ratio of stalling torque to the full load torque when resistance of 1 ohm is connected in series with the armature. So पहले से कितना था आर्मेचर में 0.5 और एक और ओम लगा दिया तो यहाँ क्या आएगा आर ए प्लस आर कितना आएगा 1.5. So under the stalling condition you will get 240 upon 1.5. It is 160 एम्पियर. एक्चुअली पहले 40 था फुल लोड में और स्टॉलिंग कंडीशन में एकदम से करंट विल बी इंक्रीज टू 160. अभी टी स्टॉलिंग अपॉन टी फुल लोड ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी स्टॉलिंग अपॉन टी फुल लोड. टी इक्वल टू क्या होता है ई बी इंटू आई ए sorry torque is proportional to what phi into ia. phi into ia. अभी ये phi सप्लाई वोल्टेज तो कितना सेम है ना 240 वोल्ट सॉरी कितना 240 कांस्टेंट है तो फील्ड करंट तो कांस्टेंट रहेगा तो दिस विल बी कैंसिल्ड. स्टॉलिंग कंडीशन में आइए कितना है 160 और ये कितना है फुल लोड में 40 सो इट इज 4. सो रेशियो विल बी टॉर्क अंडर द स्टॉलिंग कंडीशन विल इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ द फुल लोड कंडीशन. क्यों बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर करंट इज इंक्रीजिंग. क्लियर ना. सो दिस इज 4. ओ आंसर ए इज करेक्ट. So you must know how to do it. Okay, I am rubbing it. Okay, question number 14. Question number 14. A DC shunt motor is running at 1200 rpm when excited with 220 volt. DC शंट मोटर मतलब ये दिस इज द आर्मेचर राइट और ये आपका सप्लाई है. दिस इज द शंट मोटर. इट इज टेकिंग IL. इट इज VT कितना है 220 वोल्ट. निगलेक्टिंग द लॉसेस. लॉसेस निगलेक्ट करना मतलब क्या है रेजिस्टेंस. लॉसेस मतलब रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 है. सो EB1 इक्वल टू क्या हो जाएगा EB2 इक्वल टू व्हाट सॉरी EB1 इक्वल टू क्या है 2 VT कितना है 220 वोल्ट. भाई EB इक्वल टू क्या होता है VT माइनस IAR है ना माइनस IAR है. लॉसेस 0 है मतलब रेजिस्टेंस 0. लॉसेस 0 का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस 0 तभी तो लॉस 0 होगा. रेजिस्टेंस 0 तो IAR ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 0. सो EB1 इक्वल टू VT कितना है 220. क्लियर. स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन कनेक्टेड टू 1 सेकंड केस में क्या है सप्लाई वोल्टेज कितना है 175. सो EB2 क्या होगा EB2 इक्वल टू क्या होगा VT माइनस IA टू RA. रेजिस्टेंस तो 0 तो दिस इज 0. सो EB2 इक्वल टू VT इक्वल टू व्हाट 175. फर्स्ट केस में 220 वोल्ट है सेकंड केस में 175. क्यों सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस हो गया है राइट. नाउ वी नो EB1 अपॉन EB2 इक्वल टू व्हाट N1 upon N2 phi2. Clear na? Okay. So N1 phi1 upon. Okay. Now कुछ कंडीशन phi1 upon phi2 तो मिल जाएगा. EB1 upon EB2 मालूम है N1 मालूम है तो N2 मिल जाएगा. phi1 upon phi2 nothing is given so I am assuming torque condition can be assumed. ओके कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. ओके अच्छा ये बताओ सो N1 अपॉन N2
phi1 मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू IF1. IF1 क्या होगा? VT 220 अपॉन RF अपॉन सेकेंड, यहाँ IF2 आएगा ना, IF2 क्या होगा? 175, VT 175 अपॉन RF, तो कैंसिल्ड. क्लियर ना? कैंसिल्ड. ओके, सो बोलो क्या आएगा? EB1 कितना है? EB1 is what? 220 upon EB2 is 175 equal to N1 is given कितना? 1200. N2 we have to find into 220 और RF cancel हो गया 175. So this will be cancelled, this will be cancelled. So N2 equal to what? 1200 only. Same speed आएगी. इसका मतलब no change. N1 equal to N2 equal to 1200. So here DC shunt motor running at 1200 RPM when excited with 220 volt DC, neglecting losses and saturation. The speed of motor when connected to 175 volt DC. अगर resistance drop नहीं हो रहा है तो इसका मतलब speed पे कोई change नहीं आने वाला. It is clear. Okay. So D answer is correct. But you have to think about it, right? I am rubbing it. Question number 15. Question number 15. A 240 volt DC series motor takes 40 ampere when giving its rated output at 1500 RPM. Its resistance is 0.3 ohm. The value of resistance which must be added to obtain the rated torque at 1000 RPM is. So you can do it. EB1 equal to, first of all, in every cases we will calculate EB1 equal to what? EB1 equal to what? VT minus IA1 RA plus R सीरीज मोटर है ना. सो इट इज गिवन VT कितना है? 240 माइनस आर्मेचर करंट 40 इंटू दिस इज 0.3 RA plus RSC, so it is 12 volt, 228 volt EB1. So EB1 equal to what? EB1 upon EB2 equal to what? N1 phi1 upon N2 phi2 equal to N1 phi1 in place of phi1 can we say IF1 or IF1 or IA1 same. In case of series motor, always in case of any machine you can replace phi by IF because flux, who is producing flux? Field current. And in case of series motor, field current and armature current both are same. Okay, so N2 IA2. Clear? Okay, so that is the case. Now I have to find IA2 first. So how will you get IA2 from the torque condition? To obtain the rated torque, इसका मतलब है T2 equal to T1. पहले केस में भी rated torque था, अभी भी rated torque है. They have not given any other torque condition, so they have given rated torque in both the cases. So T2 equal to क्या होता है? phi2 IA2 equal to phi1 IA1. phi2 के बदले में IA2 स्क्वायर इक्वल टू IA1 स्क्वायर. IA1 स्क्वायर कितना है? 40 स्क्वायर. सो IA2 कितना आएगा? 40 एम्पियर, सेम करंट. ओके, सो दिस विल बी कैंसिल्ड. IA2 equal to IA1, it will be cancelled, right? So from here you can calculate EB2. EB2 equal to what? EB1 into N2 upon N1. In this way you can calculate EB2.
So EB2 equal to 228, that is EB1 into N2 is 1000, it is given, and N1 is given 1500. So from here EB2 equal to, you will get EB2 equal to 152 volt. 152 volt. And from here EB2 equal to what? Vt minus Ia2 0.3 पहले से था प्लस R. EB2 equal to Vt minus Ia2, this sum of these two. So here this is given, right? This is given, Ia2 we know it, this is known, you can calculate R. So if you solve it, you can get R. R equal to, I am getting this minus this, sorry, this is equal A. So I am getting R equal to what? 1.9 ohm. Okay, D answer is correct. Okay, so in this way you can do it. D answer is correct. I am rubbing it. Question number 16. Question number 16. A 240 volt DC shunt motor draws 15 ampere. Shunt motor draws 15 ampere. मतलब IL is given 15 ampere. In this problem IL is given. A DC shunt motor draws while supplying a rated load at speed of 80 radian per second. The armature resistance is 0.5 ohm and the field winding resistance is 80 ohm. So IF कितना आएगा? Field current 240 volt Vt upon RF. So 240 upon 80 equal to 3 ampere. So you will get IA1. IA or IA1 equal to what? IL minus IF. If your concept is clear, you can do it fast. So it is 12 ampere. So IA equal to IL minus IF is 12 ampere. Okay, so you will get 12 ampere IA1. So you can calculate EB1. EB1 equal to Vt minus IA1 RA. Clear na? So you will get 240 minus 12 into 0.5. 234 volt you will get at plugging. प्लगिंग में क्या करते हैं हम? आर्मेचर टर्मिनल के वोल्टेज चेंज करते हैं. आर्मेचर टर्मिनल के कनेक्शन चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ए जनरेटर. तो जनरेटर बन जाएगा तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वो ऐड होगा था Vt में. तो एट प्लगिंग नेट वोल्टेज क्या आएगा भाई? एट प्लगिंग मोटर विल बिकम जनरेटर. जनरेटर बन जाएगा तो जो EB और Vt सेम डायरेक्शन में आएंगे. सो नेट वोल्टेज क्या आएगा? Vt प्लस EB. Vt कितना है? 240 और EB1 कितना है? 234. सो यू विल गेट 474 वोल्ट. दैट इज द डी आंसर इज करेक्ट. जब प्लगिंग में जाओगे ना तो मोटर विल बिकम जनरेटर, तो वोल्टेज नियरली डबल हो जाता है. तो पहले 3 आंसर, ये नो नीड टू डू दिस कैलकुलेशन, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है. क्लियर ना? क्योंकि जैसे आप प्लगिंग में जाएंगे दिस वोल्टेज विल बी बिकम दैट वोल्टेज, नेट वोल्टेज विल बिकम नियरली डबल. नियरली डबल मतलब 240 का डबल कितना हो जाएगा? 480. तो थोड़ा सा 480. तो पहले तीनों आंसर रॉन्ग है. जब मोटरिंग केस में है तो नेट वोल्टेज क्या आएगा? 6. क्यों भाई? 240 माइनस 234, 6 वोल्ट. लेकिन जैसे ही प्लगिंग करोगे तो ये वोल्टेज, ये ABC आंसर रॉन्ग ही है. No need to do any problem. Just if your concept is clear, you can write 474 volt. Okay.
Okay, question number 17. Question number 17. What is the question number 17? A 15 kilowatt 230 volt DC shunt motor has an armature circuit resistance of, yes, so you can say EB, you can say EB1. EB1 equal to what? VT minus IRA. 230 minus IA कितना है? Line current is given 5 ampere. So IL is given कितना? 5 ampere. IF क्या होता है? IF VT upon RF. VT कितना है? 230. RF कितना है? 230. So 230 upon 230 equal to 1 ampere. So IA कितना आएगा? IA equal to कितना होगा? What is the value of IA? IA1 equal to IL minus IF. 5 minus 1 4 ampere. 4 into RA कितना है? 0.4. Okay, so you will get this 228.4 volt. So please, your concept agar clear, you can do it fast. EB2. Okay. Motor runs at 1400 RPM. At full load, second case यहाँ से शुरू हुआ है. At full load, the motor draws a line current of 70 ampere. Okay, so 7, तो EB2 मिल जाएगा ना. EB2 इक्वल टू, जब ऑलरेडी दिया है VT कितना है? 230 माइनस IA2 कितना हो जाएगा? 69. क्यों 69? अभी ये IL कितना है? 70 एम्पियर. लाइन करंट है 70. ये तो सेम रहेगा फील्ड करंट. ओके, तो इट विल बिकम 69 इंटू 0.4. कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 230 माइनस 69 इंटू 0.4. आई एम गेटिंग 202.4 volt EB2. Now EB1 upon EB2 equal to what? N1 phi1 upon N2 phi2. And in case of shunt motor, field current is same. Field current same है. कितना है? 1 ampere. So flux will be same. Everything is known. You can calculate N2. So N2 equal to what? N1 into EB2 upon EB1. Just use the calculator. N1 is 1400. It is given 1400 RPM. EB2 I got 202.4 upon EB1 I got 228.4. So if you use it, you will get speed. It will be reduced. So I am getting 1240. So in this way you can solve the problem. Please, if your concept is clear, ये इस टाइप के प्रॉब्लम गेट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. If your concept is clear, you can get it, right? Okay, next problem I am going to discuss. Question number 18. Question number 18. 220 volt DC shunt motor is operating at a speed of 1440 RPM. The armature resistance is 1 ohm and armature current is 11 ampere. So if everything is given, you can calculate EB1. EB1 equal to what? VT minus IA1 RA. VT कितना है? 220 minus IA1 is given 11 ampere. डायरेक्ट लिखा है आर्मेचर करंट ऑफ 11 into 1. Okay, so you will get 209 volt. Now, if the excitation of the machine is reduced by 10%, okay, extra resistance to be put in the armature circuit to maintain the same speed and torque. अभी IA2 नहीं मालूम, so EB2 निकालना है तो क्या होगा? EB2 इक्वल टू क्या होगा? VT minus IA2. But IA2 नहीं मालूम, but torque condition is given. Same speed and torque. T2 equal to T1. T2 equal to what? Phi2 IA2
इक्वल टू phi1 IA1. क्लियर? सो IA2 क्या होगा? IA2 इक्वल टू व्हाट? phi1 IA1 अपॉन phi2. phi1 इज phi1, IA1 कितना है? 11. phi2 कितना दिया है? If the excitation of the machine is reduced by 10%, so phi2 इक्वल टू कितना है? 0.9 ऑफ phi1. भाई एक्साइटेशन आप कम कर रहे हैं तो फ्लक्स विल बी रिड्यूस बाई 10%, राइट ना? तो ये phi1 कैंसिल्ड, यू विल गेट 11 अपॉन 0.9. आई एम गेटिंग 12.2 एम्पियर. IA2 आई गॉट इट. सो IA2 मिल गया तो EB2 मिल जाएगा. EB2 इक्वल टू व्हाट? क्या निकालना है? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस. सो EB2 इक्वल टू निकालेंगे. नाउ EB1 अपॉन EB2 इक्वल टू N1 phi1 अपॉन N2 phi2. ये फार्मूला है. नाउ आई हैव गिवन द सेम टॉर्क एंड सेम स्पीड. तो स्पीड इज सेम, N1 और N2 सेम है, राइट? तो कैंसिल, दिस टू कैंसिल. phi1 है, phi2 कितना है? 0.9 ऑफ phi1. आई हैव गिवन excitation is reduced by 10%. Okay, so you can calculate EB2 by from this formula, EB1 into 0.9. so EB2 I am getting 188.1 volt. I am getting EB2. अभी आपको EB2 इक्वल टू क्या होता है? EB2 इक्वल टू क्या होता है? VT माइनस IA2 RA plus additional resistance. This is known 188.1. VT is known 220. This is known 220. IA2 we got it 12.2 यहाँ से. RA is known. RA कितना है? 1 ohm. 1 ohm. It is 1 ohm. Plus additional resistance we can calculate. So I am going to use the calculator. I am getting R equal to 1.61 ohm. I am getting, that is A answer is correct. So the examiner may ask this question. Your concept should be clear. You can do it. Okay. So it is 1.61. Okay. So I am rubbing it. Question number 19. A 250 volt DC shunt. Question number 19. Okay. So यहाँ पर भी हमको EB निकालना है. You can do it. मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ. EB. Sorry. EB इक्वल टू व्हाट? VT कितना है? 250 माइनस IA. ओके, सॉरी मैं ये रब करता हूँ. जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन. A 2 machine has a armature circuit of 0.6 ohm, field circuit of 125 ohm. The machine is connected to 250 volt. Means the motor is operated as a generator first and then as a motor, right? Separately. Then line current of the machine in both the cases is 50 ampere. So IL is given 50 ampere in both the cases, right? In both the cases IF कितना होगा? VT upon RF कितना? 250 upon 125, 2 ampere. So in case of first is running as a generator, so EG equal to what? Generator. If it is working as a generator, as operated as a generator and then as a motor, तो generator में क्या होता है? VT plus IA RA. ये प्लस आएगा. क्लियर? सो क्या होगा? VT कितना है? 250
प्लस IA कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IA इन केस ऑफ जनरेटर? IA इक्वल टू क्या होगा, IL प्लस 52. Be careful as a generator, IAG for generator क्या होगा, IL plus IF. If you see the direction, okay, so it is 52 into RA कितना है 0.6. So you will get 281.2 volt. And when it is working as a motor, EM as a motor, EM equal to what, formula VT minus IARA होता है, VT minus IARA. VT कितना है 250 माइनस IA कितना है अभी, इन केस ऑफ मोटर IA फॉर मोटर के केस में क्या होगा, IL माइनस IF होता है, कितना 250 माइनस 50 minus 2, 48 into 0.6. So you will get 221.2 volt. So I got it. Now what is the ratio? Speed as a generator to the motor. So EG upon EM इक्वल टू क्या होता है, NG upon NM phi upon phi. Clear? और phi in both the cases will be same because field current in both the cases same है, same supply voltage, so same. So this is known. I think it was given. Ratio निकालना है. So okay, you will get the ratio. So EG upon EM equal to NG upon NM equal to 281.2 upon 221.2 equal to 1.27. That is the ratio you will get. You can get it, right? So in this way you can find the ratio. And the question number 20, I am going to discuss only 20 questions because न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, इसके कारण थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है वीडियो. So I am going to discuss only 20 questions here. So last question I am going to discuss. Question number 20. The no load speed of 230 volt separately excited DC motor is 1400 RPM. The armature resistance drop and brush drops are negligible. अगर drop 0 है तो इसका मतलब क्या है, EB equal to VT. EB equal to VT minus IARA. और drop 0 है मतलब this is 0. So EB equal to VT equal to what, 230. Clear? The armature resistance drop and okay. The field current is kept constant. Field current constant है मतलब flux will be constant. Okay. The torque of motor in Newton meter. The torque of motor in Newton meter for an armature current of 8 ampere. So output of armature क्या होता है, EB into IA equal to 2 pi NTA upon 60. This is, we got 230. IA is given 8 ampere equal to 2 pi 60 N is given 1400 RPM. It is given 1400. So you can calculate TA. So if you calculate the TA equal to what, 230 into 8 into 60 upon 2 pi into 1400. So I am getting TA equal to 12.55 Newton meter. Okay, so in this way you can do it. Anyway, I have solved 20 MCQs questions only here.
because more questions we have solved, so it will become lengthy also. I'm stopping here only. Okay, this is the answer key I have given. If you want, you can see here. Remaining questions I have discussed. Okay, so thank you very much for listening me carefully. Thank you.